and welcome to my channel. Today we will learn restaurant conversation in English. So let's get started. So this is a conversation in between a customer and a person who attends the customer in the restaurant. So the person who attends you is called as attendant. So the attendant will ask, "Hello sir, how can I help you?" Which means, "नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?" The customer will reply, "Hello, I would like a table for 2, please." Which means, "नमस्ते, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए." Then the attendant will reply, "Of course, please come with me." ज़रूर, कृपया मेरे साथ आइए. Here is a table for 2. 2 लोगों के लिए टेबल ये रहा. Then the customer will reply, "Thank you." धन्यवाद. Then the customer will ask, "Can you give me the menu please?" क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं? Then the attendant will reply, "Yes, of course." हाँ, ज़रूर. Here you are. ये रहा. Then the customer will reply, "Thank you." धन्यवाद. Then the attendant will ask, "Can I get you anything?" क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? Then the customer will reply, "Yes, an orange juice please." हाँ, एक ऑरेंज जूस ले आइए. Then the attendant will say, "Great, I'll be right back." बहुत अच्छा, मैं अभी ले आता हूँ. Then after some time the attendant will ask, "Can I get your order please?" क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? Then the customer will reply, "Yes, we'll have a white sauce pasta." Which means, हाँ, हम white sauce pasta खाएंगे. Then the attendant will ask, "Would you like a starter sir?" Which means, क्या आप starter चाहेंगे sir? Then the customer will reply, "Yes, I'll have a tomato soup." Which means, हाँ, मैं tomato soup लेना चाहूँगा. Then the attendant will say, "All right sir, I'll be right back." Which means, ठीक है सर, मैं अभी लाता हूँ. So ये कॉन्वर्जेशन था अटेंडेंट एंड कस्टमर का. अब हम जिनके साथ आप रेस्टोरेंट गए हैं उनसे आप इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्जेशन करेंगे ये सीखेंगे. ये कुछ बेसिक कॉन्वर्जेशन है जिसका ट्रांसलेशन अभी हम इंग्लिश में सीखेंगे. सपोज समवन आस्क्ड यू, "कैन यू प्लीज पास मी द सैलेड?" विच मीन्स, क्या आप मुझे सैलेड दे सकते हैं? देन यू कैन रिप्लाई, "यस ऑफ कोर्स." हाँ, ज़रूर. Then the person will say thank you, which means धन्यवाद. Now we will continue the conversation in between the customer and the attendant. So the attendant will ask, "Did you enjoy your meal?" क्या आपको भोजन अच्छा लगा? Then the customer will reply, "Yes, it's great. I'm so glad we came to this restaurant." Which means, बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि हम इस रेस्टोरेंट में आए. Then the attendant will ask, "Would you like something for dessert?" क्या आप डिजर्ट में कुछ लेना चाहेंगे? Then the customer will reply, "Yes, for dessert I'll have ice cream please." Which means, डिजर्ट में मैं आइसक्रीम लेना चाहूँगा. All right, so for example, अगर वो अटेंडेंट थोड़ी डिस्टेंस पे हैं एंड आपको उन्हें बुलाना है तो आप किस तरीके से बुलाएंगे वो हम देखते हैं. "Excuse me, can you bring me a glass of water please?" Which means, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं? Then the attendant will reply, "Yes, of course." हाँ, ज़रूर. Then the customer will say thank you. धन्यवाद. Then the attendant will ask, "Can I bring you something else?" क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ? Then the customer will reply, "No, thank you. Just the bill." Which means, नहीं, धन्यवाद, बस बिल ले आइए. Then the attendant will say, "Okay sir, I'll get you the bill." Which means, ठीक है सर, मैं बिल लेकर आता हूँ. So friends, this was a short restaurant conversation in English.
So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.